All of you get ready for the prayer. Sit in a proper way. Okay, Priyanshi, screen is visible. N- No, ma'am. Ma'am, now it is visible. Just wait. Okay. Now start the prayer. All of you sit in a proper way and do the prayer. Lord of all power and might, give me wisdom and understanding today. Let me grow in knowledge and bear fruit in active goodness. Strengthen me with ample power to meet whatever comes with fortitude, patience, and joy, and to give thanks in all things. Amen. Okay. Okay. So today we will start with the topic that is the C4 pathway. Okay. So firstly we will do the C4 pathway. Already we have discussed the adaptations that are present in the C4 plant. Okay. Voice is audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so in the last Yes, class ma'am. we have discussed about the adaptations in C4 plant. That first one is that they are having the two type of chloroplast, a granular and granular chloroplast, and secondly they are showing the Kranz anatomy. Okay, so due to this two type of adaptation, they avoid the process of photorespiration. You know कि photorespiration is a problematic condition. So to avoid the photorespiration, some plants having these two type of adaptations. So the plants, those having this type of adaptation, they are called as the C4 plants. So adaptations we have discussed. So today we will discuss the pathway of the C4 cycle. Then after that we will study the CAM pathway. It is another pathway for the photosynthesis. And after that we will start with a new topic, that is the transportation in plants. Okay. Okay. Now screen is visible. No, ma'am. Just wait. No, ma'am. Yes, ma'am. Wait. Yes, Okay. ma'am. So Visible. now just look. Okay. So now just look into the picture and try to understand. This is the C4 pathway. Okay, C4 pathway जो है it takes place in two type of cells. You already know कि इसमें Kranz anatomy है, तो मैंने आपको बोला था कि mesophyll cells, the cells that are present on the outer side, and it also takes place in the bundle sheath cell. Okay, जो C4 pathway है it takes place in two type of cell. One is the mesophyll cells में होती है, and second one is your uh, bundle sheath cell. Okay, so in this you can say कि these are the, you can see here this is a mesophyll chloroplast and this is the bundle sheath chloroplast. होता दोनों किसमें है, chloroplast में है, but these are the chloroplast of the mesophyll cell. Then you here you can see the bundle sheath chloroplast. Now just look into the picture. First one is the atmospheric CO2. When plant takes the atmospheric CO2, in this it is written, यहाँ पे पूरा दिया हुआ, but in this you can say कि CO2 जो है when combined with water it forms H2CO3 bicarbonate. ठीक है, then this H2CO3 gets dissociated into H positive ion and HCO3. Okay, this is the bicarbonate ion. So bicarbonate की ion की form में जो CO2 जो है वो available होती है. Okay, so you can see here इसमें जो है short में लिखा हुआ, but the whole is written here in the side. You can say C CO2 when combined with water it form H2CO3. ये जो H2CO3 है it dissociate into H positive and HCO3. Okay, bicarbonate ions. Now starts from here. Bicarbonate ion जो है, this bicarbonate ion is taken by the CO2 जो है, और इसमें किसमें मिक्स होते हैं दिस बाइकार्बोनेट आयन, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड. Okay, so this bicarbonate ion is taken by the PEP, the phosphoenol pyruvate. Okay, that is also called as a phosphoenol pyruvic acid. You can see here दोनों जो है वो combine होते हैं. And enzyme involved is the PEPCO, PEPCO. Okay, phosphoenol pyruvate carboxylase. क्योंकि there is a addition of carbon dioxide, so bicarbonate ion gets added with the PEP. इसको short form इसकी क्या है, PEP, phosphoenol pyruvate. Enzyme involved is PEPCO. Okay, phosphoenol pyruvate carboxylase. Enzyme name of the enzyme is not written here, but you have to remember कि PEPCO, phosphoenol pyruvate carboxylase. Okay, so in the presence of enzyme PEPCO,
bicarbonate ion gets added with the PEP and they forms the pyruvic acid. Okay, यहाँ पे जो है ये you can see here कि pyruvic acid की formation होती है. But just remember कि you can see just look just look from this side. Bicarbonate ion जो है gets added with the phosphoenol pyruvic acid with, और इसमें क्या होती है, फिक्सेशन होती है. फिक्सेशन मीन एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे फॉर्म्स द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. Okay, you know कि phosphoenol pyruvate is a 3 carbon compound. It is taking 1 carbon from this carbon dioxide and forms the oxaloacetic acid. Okay, so just do from this side. Okay, just look into the arrow and try to understand कि cycle is going on this side. Oxaloacetic acid. Now oxaloacetic acid is a 4 carbon compound. Okay, pyruvic acid is a 3 carbon compound. Bicarbon में से एक carbon लिया, then it forms the oxaloacetic acid, that is a 4 carbon compound. Okay, oxaloacetic acid then convert into the malic acid. Malic acid is again a 4 carbon compound. Now in this type of reaction there is a use of energy. Okay, NADPH2 जो है वो reduce हो रहा है NADP में. Now this malic acid now gets transported into the bundle sheath cell. This is important. Okay, just focus into this कि अब ये जो malic acid यहाँ बनेगा, this malic acid just move into the bundle sheath cell. Okay, transportation is there. Now this malic acid, you know, it is a C4 acid, mean it is a C4 compound, 4 carbon compound. Okay, now there's a decarboxylation will takes place. Okay, क्योंकि malic acid is a 4 carbon compound, it gives out 1 carbon dioxide, एक carbon dioxide दे देगा, and then it forms the pyruvic acid. Okay, pyruvic acid is a 3 carbon compound. Okay, this pyruvic acid then again transported into the mesophyll chloroplast. Okay, again जो है cycle करेगा. But important thing is that कि this carbon dioxide जो यहाँ पे बना, I have told you that dark reaction of photosynthesis in case of C4 plant is taking place in the bundle sheath cell. हमारे मेन जो हमने यहाँ पे फोकस क्या करना है कि जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रही है, लाइट रिएक्शन वो तो बाहर होगी, बट जो डार्क रिएक्शन है दैट टेक्स प्लेस इन द बंडल शीथ सेल. एंड बंडल शीथ जो क्लोरोप्लास्ट है, यू नो इट इज प्रेजेंट डीप इनसाइड द लीव्स. यस, बिल्कुल डीपली प्रेजेंट होगा. नाउ यू नो कि डीपली प्रेजेंट क्यों है. ओके, कि हाई टेम्परेचर से और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 से बचने के लिए. सो मेन यहाँ पे जो पॉइंट है फोकस का, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से रिलीज होगी. दिस कार्बन डाइऑक्साइड जो है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ कैल्विन, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऐड होगी RUBP के साथ, एंड इट विल परफॉर्म द कैल्विन साइकिल. तो यहाँ पे आपकी डार्क रिएक्शन जो है होने लग जाएगी विद द रिलीज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जो pyruvic acid है, this again gets transported into the mesophyll chloroplast and then again regeneration is there, means phosphoenol pyruvate की formation होगी, क्योंकि because pyruvic acid में कोई भी phosphate group नहीं है, तो it take phosphate group from the ATP and then again forms the phosphoenol pyruvate. Okay, so this is all about the C4 pathway. इंपॉर्टेंट थिंग इसमें जो आपने फोकस करनी है दैट इज कि केल्विन साइकिल यहाँ पे जो है वो बंडल शीथ सेल्स में हो रहा है. एंड यू नो कि बंडल शीथ सेल्स जो हैं आर द सेल्स दैट आर प्रेजेंट डीप इनसाइड द लीव्स. इसीलिए एडेप्टेशन है. ओके, टू अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन. फोटो रेस्पिरेशन कब होती है? जब हाई टेम्परेचर होता है, हाई ऑक्सीजन होगी. So to avoid, to prevent from high temperature and high concentration of O2, the Calvin cycle will takes place in the bundle sheath chloroplast. Okay, जो Calvin cycle है, जो dark reaction है वो अंदर जाके होगी with the release of this carbon dioxide molecule. और इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को कौन गेन करेगा? RUBP, जो आपका नॉर्मल कैल्विन साइकिल है. दिस RUBP then gets added with the carbon dioxide and they form the phosphoglyceric acid. वो आगे सेम जो आपका कैल्विन साइकिल सेम होगा. ओके, सो स्टार्ट्स फ्रॉम हियर कि जो एटमॉस्फेरिक CO2 जो है, इट टेक्स द एटमॉस्फेरिक CO2. दिस एटमॉस्फेरिक CO2 जो है, ये तो इसकी फॉर्म है कि इस फॉर्म में होगी, अदरवाइज इट इज एटमॉस्फेरिक CO2 gets added with the phosphoenol pyruvate. Okay, this phosphoenol pyruvate is a 3 carbon compound. It gets added with this carbon dioxide molecule and form the oxaloacetic acid. This is called fixation. Fixation क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है. Okay, so oxaloacetic acid is a 4 carbon compound. It gets converted into a malic acid, that again is a 4 carbon compound. This malic acid, when oxaloacetic
acetic acid change into the malic acid, there is a release of energy. There is a use of energy, not release. There is a use of energy, and this malic acid gets transported into the bundle sheath chloroplast. And malic acid gives out one molecule of carbon, and with these three molecule, you know कि malic acid is a C4 acid, okay, pyruvic acid is a C3 acid, means it's a 3 carbon compound. So one carbon molecule is released in the form of CO2. pyruvic acid जो है again enter करेगा mesophyll chloroplast में, again perform the same cycle, but this carbon dioxide will perform the Calvin cycle by adding with the RUBP, that is the ribulose phosphate. Okay, so is this clear? All of you just tell me C4 cycle or pathway is clear to you? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so just remember कि what is the need of the C4 cycle. C4 cycle क्यों होता है? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए. अगेन आई एम रिपीटिंग यू, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि नॉर्मल प्लांट्स में कैल्विन साइकिल होता है, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल कंडीशंस वो C2 परफॉर्म करने लग जाते हैं, फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म करने लग जाते हैं. बट टू अवॉइड द फूड, बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन इज अ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन. फोटो रेस्पिरेशन मीन रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ओके, सो यू नो कि प्लांट्स तो लाइट के प्रेजेंस में रिस्पायर नहीं करते हैं. अब जब प्लांट ही लाइट के प्रेजेंस में रिस्पायर करने लग जाएंगे, मींस दे आर टेकिंग द ऑक्सीजन, सो दैट इज ऑब्वियसली अ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन. So to avoid that condition, some plants is having the adaptation, that is the Kranz anatomy, and the two type of chloroplast, the granule and the A granule chloroplast, and the plants that having these type of adaptation, they are called as the C4 plants. Okay, so this is all about the C4 pathway. Now our next question is the CAM pathway. Okay, CAM, crassulacean acid metabolism. Why this name is given? Because there are certain plants, especially succulents, which grow under extreme xeric condition, fixed atmospheric CO2 in dark. Since the process was observed in the plants belonging to family Crassulaceae, Bryophyllum है, sedum जो है, it was termed Crassulacean acid metabolism. Okay, just remember कि जो succulents plants होते हैं, succulents mean जो xerophytes होते हैं, xerophytes mean जो जैसे आपके cactus वगैरह हैं, तो उनमें जो desert plants स्पेशली होते हैं, they have to avoid the लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो ट्रांसपिरेशन होती है, वाटर लॉस, उनको अवॉइड करना होता है, प्रिवेंट करना होता है. सो फॉर दिस दे आर हैविंग द अडेप्टेशन, दैट इज द CAM पाथवे. क्या अडेप्टेशन, दैट वी विल सी. बट उसने कहा है कि जो CAM पाथवे किन प्लांट्स में होता है, जो सकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, ओके, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनमें उन्होंने वाटर लॉस जो उसको प्रिवेंट करना होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को इन डार्क, नॉट ड्यूरिंग द डे, इन ड्यूरिंग द डार्क. Since the process was observed in the plants belonging to family Crassulaceae, इसलिए क्योंकि mostly जो इसके members हैं, Crassulaceae के members हैं, वो perform कर रहे हैं CAM pathway. That's why the name is given Crassulacean acid metabolism. Similar metabolism have been found to occur in plants belonging to cactus है, orchid है, Euphorbiaceae family के कुछ members भी हैं, जैसे cactus वगैरह हैं, जिनमें adaptations होते हैं, जो modified plants हैं, to avoid the loss of water. So all these plants which carry out crassulacean acid metabolism are referred to as the CAM plants. उनको आप CAM plants बोलते हो. Now you have to see कि what is the main adaptation. इनमें main adaptation क्या present है. Okay, so most characteristic feature of this plant is that their stomata remain open at night. Okay, इनका जो stomata है वो night को open रहता है, and it is closed during the day. Okay, क्योंकि during the day if the stomata remain closed, so definitely there is no loss of water. Okay, so that's why they are having that adaptation कि their stomata remain open during night and closed during the day. Okay, ऐसे stomata को बोलते हैं photoactive stomata that remain open during the night and closed during the day. Okay, so this is the adaptation. Okay, अब दिन में close रहेगा तो definitely there is no loss of water. Okay, now we will see the pathway of the crassulacean acid metabolism. You can see in the picture, it is clearly visible during night and during day. Okay, you can see in the picture dark night में है, उसमें light day. So during the in this way stomata जो है closed रहेगा, उसमें क्या night में the stomata remain open and during day the stomata, you can see कि stomata क्या होगा, closed होगा during the daytime. Now what is the pathway? You can see here in the picture
अगेन इसमें भी वही सेम है. यू कैन सी हियर फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जैसे आपका वहां बना था इन द C4 पाथवे. फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है, और यू कैन से फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड गेट्स एडेड विद द CO2, सेम जो C4 पाथवे में आपने देखा. देन इट फॉर्म्स द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. ओके, oxaloacetic acid is a 4 carbon compound. It forms the malic acid. Okay, are you all getting? Yes, ma'am. हाँ, ये जो पाथवे है इट इज यहाँ तक जो है इट इज ऑलमोस्ट द सेम विद द योर C4 पाथवे जो भी आपने देखा. सो नाउ फॉस्फोइनोल पायरुवेट व्हेन कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ पे स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा इज ओपन ड्यूरिंग नाइट, is changed into the oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid change into the malic acid. Again there is a use of energy, and this malic acid, this is important कि malic acid जो है get stored in the vacuole. Okay, so night में जो है fix होगी कार्बन डाइऑक्साइड, oxaloacetic acid की formation होगी. Again there is a formation of malic acid, and this malic acid you can see in the picture. ये malic acid कहाँ store हो गया? vacuole के अंदर. Okay, now what will happen during the day? स्टोमेटा रिमेन क्लोज. ओके, दिस मैलिक एसिड जो है अब ये डिफ्यूज होके बाहर आएगा. ओके, अब ये वोक्यूल में है, बाहर आएगा. दिस मैलिक एसिड जो है देन चेंज इनटू द पायरुविक एसिड. यू नो कि मैलिक एसिड इज अ 4 carbon compound. Pyruvic acid again is a 3 carbon compound, and it gives out 1 carbon dioxide. Okay, and this carbon dioxide then move into the chloroplast and perform the Calvin cycle. This is very very simple and same as that of the C4 pathway, but only difference is that कि stomata का जो main difference है इसमें कि stomata remain open during the day, during the night, and close during the day. Okay, so अदरवाइज इट इज सेम. ओके, सो दिस मैलिक एसिड जो है ये वोक्यूल में स्टोर हो जाएगा रात के टाइम. ड्यूरिंग द डे इट गेट्स डिफ्यूज आउट, बाहर आ जाएगा. दिस मैलिक एसिड जो है चेंज इनटू द पायरुविक एसिड, एंड you know कि मैलिक एसिड इज अ 4 carbon compound, pyruvic acid is a 3 carbon compound. One carbon molecule is comes out in the form of CO2, and this CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये एंटर कर जाएगी क्लोरोप्लास्ट में, एंड अगेन परफॉर्म द कैल्विन साइकिल, और एनर्जी जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा इन द सेम वे जैसे आपका कैल्विन साइकिल में बनता है. पायरुविक एसिड जो है अगेन एंटर कर जाएगा फॉस्फो, अगेन जो है पायरुविक एसिड. यू नो कि व्हाट इज द डिफरेंस में पायरुविक एसिड एंड द फॉस्फोनोल पायरुविक एसिड? ओनली वन डिफरेंस इज दैट दे आर हैविंग, इसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप है. सो पायरुविक एसिड टेक्स द फॉस्फेट ग्रुप. ओके, एंड अगेन टेक द फॉस्फेट ग्रुप एंड अगेन फॉर्म द फॉस्फोनोल पायरुविक. अगेन जो आपका साइकिल है वो चलता रहेगा. लाइट में जो यहाँ डे के टाइम लाइट रिएक्शन वैसे ही हो रही है. ओके, लाइट रिएक्शन इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी, और वो जो एनर्जी वो वैसे ही मिल रही है कैल्विन साइकिल को. बाकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे डिफर करेगा. ओके, सो डे में लाइट रिएक्शन वैसे ही होगी, बट ओनली डिफरेंस इज दैट कि जो डार्क रिएक्शन में वो कैसे हो रही है विद द हेल्प ऑफ द मैलिक एसिड जो ऑलरेडी रात को बन चुका है. ओके, सो एसिडिफिकेशन इज देयर एंड डीएसिडिफिकेशन इज देयर. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. All of you just tell me CM pathway and C4. Just remember कि अब आपको कंफ्यूजन हो सकती है. C3 pathway is there, C2 pathway is there, C4 pathway is there, CM pathway. Okay, so just थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं, थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस हैं, अदरवाइज ऑल आर द सेम. बट मेन थिंग इज दैट कि व्हाट आर द अडेप्टेशंस. C4 में क्या अडेप्टेशंस हैं, CM में. ओके, बट जो मेन हमारा कैल्विन साइकिल है दैट इज अ मेन डार्क रिएक्शन है. ओके, मैकेनिज्म में फोटोसिंथेसिस में जो है लाइट रिएक्शन, यू नो कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज देयर, एंड इन डार्क रिएक्शन ओनली कैल्विन साइकिल इज देयर. जो बाकी साइकिल है C2, C3, CM, दीज आर द अडेप्टेशंस. ये अडेप्टेशंस हैं जो बाद में होती हैं इफ प्लांट्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म द कैल्विन साइकिल. ओके, बट मेन जो डार्क रिएक्शन है दैट इज द कैल्विन साइकिल. Okay, so this is all about the photosynthesis. Any problem, anything you want to ask regarding any type of cycle? Okay, so if there's no question, then I'm going to start with the new topic, that is the transportation in plants. Picture is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So this is the next subunit of the chapter plant physiology. Okay,
Now, in flowering plants, the complex movement of material takes place in all directions. You know कि plants में xylem है, phloem है, तो all type of movement is there. Water movement is there, food movement is there. Okay, food is moving in all direction, water is moving in only one direction, unidirectional. Okay, so that this is despite the fact that plants do not bear any circulatory system. You know कि plants don't have any circulatory system. Still the things are moving. Okay, इसीलिए तब भी जो है चीजें जो है वो मूव कर रही है. फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बट दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सो दैट वी विल सी कि अब उनमें पर्टिकुलर टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, बट फिर भी जो चीजें हैं, फूड, वाटर, मिनरल, सब कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है. So how this happen? So the plant is thus taken up, water is thus taken up by the root and reaches all part of plant up to the tip of the growing stem. You know कि soil से लेके जो growing stem के tip तक water जो है पहुंचता है. In plants, material also move over short distances. Okay, जैसे short distance में से inside the cell, across the membrane, even cell to cell. ये short distances हैं. Plants में two type के distances हैं, short distances and long distances. Short distances mean कि एक cell से दूसरे cell में water के movement, या फिर inside the cell, cell के अंदर जो movement है, या फिर even cell to cell, या फिर across the membrane. Okay, from one membrane to another membrane. So that is the short distances. The substance transported are water, mineral, nutrients, organic nutrients हैं, plant growth regulators हैं, hormones जो हैं. Over short distances, the substances move by diffusion, cytoplasmic streaming, and active transport. जो भी plants में short distances होंगे, okay, short distances होंगे, that short distances में जो substances होंगे, you know कि they move with the help of diffusion. अब diffusion we have already discussed in chapter cell biology में कि facilitated diffusion is there, जो different type की diffusion है, osmosis is there. तो वो जो शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट है वो किसकी वजह से होगी, किसकी हेल्प से, डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, फिर उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे एटीपी यूज होता है. बट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम एंड फ्लोम एंड इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि जो शॉर्ट डिस्टेंसेस सबस्टांसेस मूव करते हैं, दे मूव विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ diffusion है, facilitated diffusion is there, okay, osmosis is there, and active transport is there. But the long distances जो transport है, that takes place only with the help of the xylem and the phloem, okay, and that is called as a translocation. So in this chapter we will thoroughly discuss about the long distance transport. Short distance transport में osmosis we have already discussed. Okay, you all know कि osmosis क्या है, डिफरेंट टाइप, उसके जो सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, ऑल वी हैव डिस्कस्ड. ओके, देन डिफ्यूजन जो है, दैट यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर ऑल्सो, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा, लेकिन इन दिस चैप्टर ऑल्सो यू हैव टू स्टडी, कि यू हैव टू रिवाइज. ओके, डिफ्यूजन में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है. ओके, नाउ सो जस्ट रिमेंबर कि अगेन यू हैव टू रिपीट दैट ऑस्मोसिस को, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया और आपको आता भी अच्छे से, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन. ओके, टुडे यू ऑल हैव टू रिवाइज. आई एम just starting with the some standard terms. Okay, after that we will start with the long distance transport. Long distance transport जो xylem और phloem के through होती है, but before that we will study कुछ terms हैं इस chapter में, so that we will study. First one is the water potential. Okay, are you all getting? Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. just remember कि before starting the long distance transport we will discuss some important terms, but before these terms you have to revise the osmosis, hypertonic solution, hypotonic, isotonic, then diffusion, facilitated diffusion. Okay, that you have to study. Now, first of all, there's a water potential. You can see in the picture what is a water potential. The name is indicating. So, all living organisms require energy for their growth, to maintain metabolism, and to reproduce. Okay, so every living organism needs energy for growth, maintenance, and reproduction. As water molecule possess kinetic energy, they are in random motion, which is rapid and constant. So, उसने कहा कि water molecule, आपको पता है कोई भी सबस्टांस, जो कोई भी मॉलिक्यूल जो मूव करता है, इट मीन्स इट इज हैविंग द काइनेटिक एनर्जी. तो उसने क्या, वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, दैट्स व्हाई दे आर इन रैंडम मोशन. ओके,
Thus, water potential is known as the difference between the free energy of water molecule in pure water. Okay, just try to understand difference between the free energy of water molecule in pure water and the energy of water in any other system. Okay, so just compare this thing कि एक just compare, यहाँ आपने कंपेयर करना है फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्योर वाटर. ओके, जस्ट कंसीडर कि टू बीकर्स हैं, एक बीकर में आपके पास प्योर वाटर है and the other beaker is having solution. Okay, solution means कि उसमें जैसे water है, water के अंदर salt है, तो definitely which solution is having the more water potential? Can anybody tell me? Okay, can anybody give me the answer कि which solution? Just consider two beakers are there. One is having only the pure water and other one is having the water with the salt, means solution. Okay, so which one is having the more water potential? Just try to understand कि water potential क्या है, free energy of water molecule in pure water. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो प्योर वाटर है उसके अंदर बड़े सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बट दे आर फ्री बिकॉज दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ सोल्यूट, क्योंकि वहां पे कोई भी सोल्यूट नहीं है, तो वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री हैं. उसमें बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्योर वाटर, प्योर वाटर में कोई भी सोल्यूट प्रेजेंट नहीं है, तो डेफिनेटली जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगी उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, फ्री एनर्जी होगी, वो इजिली मूव कर सकते हैं, वहां पे वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है as compared to any other system. Any other system means the system having the solute. वहां पे जो solute present होंगे वो water के particle से bind करेंगे तो definitely जो उनकी water molecule की free energy नहीं होगी. Okay, तो वहां water potential क्या होगा, कम होगा. Okay, so you, and this you have to remember it is denoted by psi and it is expressed in pressure unit, that is a pascal. This you have to remember इसको psi से denote करते हैं, उसको pascals का unit है. But just try to understand, okay, it is assumed that greater the concentration of water in a system, greater will be its kinetic energy or water potential. That is, pure water will have the greatest water potential. So just remember कि सिर्फ pure water जो होता है, pure water का उसमें greater the concentration of water in a system, एक सिस्टम के अंदर जितना वाटर ज्यादा होगा मीन्स जितने वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा फ्री होंगे उतनी उनकी काइनेटिक्स में concentration of water in a system, greater the concentration of water in a system, greater will be its kinetic energy. जितना पानी ज्यादा होगा, जितने वाटर मॉलिक्यूल फ्री होंगे उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी. इफ काइनेटिक एनर्जी इज मोर इट मींस इट इज हैविंग द मोर वाटर पोटेंशियल. मोर वाटर पोटेंशियल मीन कि वाटर मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी है मूव करने के लिए. Okay, so it is having the more water potential and pure water will have the greatest water potential. Why pure water has the greatest water potential? क्योंकि प्योर वाटर में कोई भी सोल्यूट प्रेजेंट नहीं होता. ओके, सो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं, दे आर हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी. एंड जस्ट रिमेंबर कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो. जीरो मीन्स हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल. अब नेगेटिव में जाएगा -1 -2 मीन्स यू आर एडिंग द सोल्यूट इन द प्योर वाटर. ओके, आर यू ऑल गेटिंग? जस्ट गिव मी द रिस्पॉन्स फास्ट. Okay, Yes, ma'am. Yes, so ma'am. this Yes, is very ma'am. simple. हाँ, just consider कि pure water में water potential क्या है, psi is equal to 0 in pure water. And if you are adding solute, it means -1. If you are adding more solute, means -2, -3, तो minus में चला जाएगा. जब minus में जाएगा, it means you are adding the solute. But if it is a pure water, it is having the more water potential. It is having the highest water potential. It means it is 0. Okay. The best way to express spontaneous movement of water from one region to another in terms of its difference in the free energy of water between two regions, one with the higher energy to one with the lower energy. ये तो आपको पता ही है कि water always move from its higher concentration to its lower concentration. Means कि जैसे beaker को consider किया तो the one beaker which is having only the pure water उसमें water के molecule free ज़्यादा होंगे. The other beaker जिसमें solute ज़्यादा है उसमें जिसमें solute है water molecule कम है as compared to the first beaker. So definitely water will move, the water molecule will move from its higher energy means higher concentration means higher water potential to lower water potential. तो जो molecules है वो move करेंगे from higher concentration to lower concentration, or you can say from the region of higher water potential to the region of its lower water potential. Okay. Hence, the water will eventually move from the system containing water with higher potential to the one having lower potential down the gradient. This movement is called as a diffusion. Okay.
Then you are having the solute potential. जैसे आपको water potential, in the same way you are having the solute potential also. Okay, so this is also simple. So the amount by which the water potential is reduced as a result of the presence of solute in pure water, it is known as the solute potential. अगर आप pure water में solute add कर रहे हो, you can see here कि water potential is reduced. Water potential क्या हो जाएगा? Reduce हो जाएगा as a result of presence of solute in pure water. जब आप pure water के अंदर सल्यूट ऐड करोगे, उसमें सल्यूट प्रेजेंट होगा, तो देन डेफिनेटली उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. एंड इट इज नोन एज द सल्यूट पोटेंशियल. इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल. It is assumed that when solute or some substance is dissolved in water, pure water, the concentration of water decreases and water will have lesser free energy in comparison with pure water. So this is very very simple कि प्योर वाटर में जब आप सल्यूट ऐड करना स्टार्ट कर देते हो, तो वहां पे क्या होता है कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? डिक्रीज इन द सेंस कि सल्यूट जो है, जितने सल्यूट पार्टिकल, सपोज कि एक बीकर है, उसके अंदर 20 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. अब उसमें आपने 10 सल्यूट ऐड कर दिए, तो 10 सल्यूट मॉलिक्यूल गेट्स बाइंड विद द 10 वाटर मॉलिक्यूल. पहले उसमें 20 फ्री वाटर मॉलिक्यूल थे, अब उसमें सिर्फ 10 फ्री वाटर मॉलिक्यूल रह गए. सो डेफिनेटली उसका जो ऑस्मोटिक वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. Okay, so the concentration of water decreases and the water will have lesser free energy in comparison with pure water. It in further presence of solute particle in water reduces the free energy of water, due to which water potential also decreases. Okay, so solute potential and water potential is clear. Yes, any confusion Yes, is there? ma'am. Yes, ma'am. ओके, दिस टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट क्योंकि आगे आपने पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम पढ़ना है. सो दीज आर द बेसिक. यू मस्ट नो कि व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल, व्हाट इज द सल्यूट पोटेंशियल. देन नेक्स्ट वी आर हैविंग द प्रेशर पोटेंशियल. ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर pressure potential is also simple. उसने if a pressure more than the atmospheric pressure is applied to a pure water or a solution containing solute, the water potential increases. Okay, means this is equal to pumping water from one place to another. Our heart build up pressure for the circulation of blood in the body. Means कि उसके pressure build करना. Now just try to understand. In this you can say, when water enter a plant cell through diffusion, इसको रीड करो यहाँ से. उसने कहा when water enters a plant cell through diffusion, it becomes turgid due to building of pressure against the cell wall in the plant system. जब वाटर जो है एंटर करता है प्लांट सेल में थ्रू द डिफ्यूजन, ओके, तो देन दैट प्लांट सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. क्योंकि वाटर जो है वो एंटर करेगा प्लांट सेल में, तो डेफिनेटली द प्लांट सेल बिकम टर्जिड. अब टर्जिड होने से क्या होगा? देयर इज अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द सेल. ओके, सो इट बिकम टर्जिड ड्यू टू द बिल्डिंग ऑफ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल इन अ प्लांट सिस्टम. ओके, सो दिस इज सिंपल कि जब वाटर प्लांट सेल के अंदर एंटर करेगा, सेल टर्जिड हो जाएगा. टर्जिड नहीं, फूल जाएगा. ओके, तो टर्जिड होने से क्या होगा कि देयर इज अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द सेल. ओके, दिस लीड टू इंक्रीज इन द प्रेशर पोटेंशियल. जिससे क्या होता है? प्रेशर पोटेंशियल जो वो इंक्रीज होता है. इट इज यूजुअली पॉजिटिव इन नेचर एंड हेंस नोन एज द टर्गर प्रेशर. दिस इज कॉल्ड एज द टर्गर प्रेशर. ओके, सो टर्गर प्रेशर इज वेरी सिंपल कि एक आपका होता है, जैसे आपका प्लाज्मोलिसिस है. जब प्लांट सेल लूज करेगा वाटर, दैट इज अ प्लाज्मोलिसिस. जब प्लांट सेल गेन करता है तो वो टर्जिड बन जाता है. Okay, so that is the pressure potential. And loss of water during transpiration produce a negative hydrostatic pressure or tension in the xylem. And अब pressure potential की क्या यहाँ significance क्या है? तो उसने कहा pressure potential जो है, loss होता है water during transpiration. You know कि plant loss water करते हैं. There's a loss of water in plants during transpiration. उससे क्या होता है? Produces a negative hydrostatic pressure. Just try to understand कि high pressure होगा तो positive में आएगा. जब लॉस हो जाएगा वाटर का, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, मींस नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मीन टेंशन इन द जाइलम. ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एसेंट ऑफ सैप ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. आगे हमने डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप, मींस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th आल्सो कि क्या होता है एसेंट ऑफ सैप. तो एसेंट ऑफ सैप के लिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मींस नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और टेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द जाइलम.
इसी टेंशन की वजह से, इसी नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से ही तो वाटर मूव करता है. एसेंट ऑफ सैप होता है, मींस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ओके, ड्यू टू दिस नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. ओके, सो जस्ट रिमेंबर कि प्रेशर पोटेंशियल जो है, इफ इट इज मोर मींस इट इज यूजुअली पॉजिटिव इन नेचर. ओके, बट इफ इट जो प्रेशर पोटेंशियल जो है, मीन जब प्लांट लॉस करते हैं वाटर, तो प्रेशर पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज. डिक्रीज मीन्स जिसको आप नेगेटिव में बोलोगे, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. ओके, and the water potential of any system is thus affected by both solute potential and pressure potential. Okay, so water potential जो है वो solute potential और pressure potential दोनों से उसको affect होता है. Okay, so is this clear? Pressure potential is clear, but just remember कि you have to know, you must know कि what is the significance of all these things. Water potential की significance क्या है? Water potential की significance ये है कि water potential जो है, तभी तो किसी सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा तभी तो वाटर मूव करेगा. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल? मीन्स कि किसी सेल में से वाटर को मूव नहीं होने देना है. सेल नीड वाटर, सो देन इट इज हैविंग द सोल्यूट पोटेंशियल. ओके, तो प्रेशर पोटेंशियल मीन अगेन यू नो कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर पोटेंशियल? फॉर द upward movement of water, for the ascent of sap. Okay, so pressure potential is clear. Yes, ma'am. Okay, Yes, all of you ma'am. just these ये जो terms है ना, ये these terms are very very simple, but just try to understand कि ये basic concepts हैं. You must know कि pressure potential, water potential, okay, what is it, and इसको डिनोट कैसे, जैसे साई पी से आप डिनोट कर रहे हो, सोल्यूट पोटेंशियल को कैसे डिनोट कर रहे हो, वाटर पोटेंशियल को कैसे डिनोट कर रहे हो. ओके, नाउ next you are having the osmotic pressure. Okay, now you can see in the picture, osmotic pressure means the maximum amount of pressure which can be developed in a solution when it is separated from a pure water from a by semi permeable membrane is called as the osmotic pressure. Osmotic pressure means कि उसने क्या है, एक प्रेशर जो डेवलप होता है जब आप, उसने क्या है, इन अ सोल्यूशन व्हेन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अ प्योर वाटर. जब आप एक सोल्यूशन को प्योर वाटर से सेपरेट करते हो, और सिंपली यू कैन से कि अगर आप एक सोल्यूशन के अंदर आप प्योर वाटर के अंदर और ज्यादा सोल्यूट ऐड करते हो, ओके, वैसे भी बोल सकते हो. और उसमें विच कैन बी डेवलप्ड maximum amount of pressure which can be developed in a solution when it is separated from a pure water. Or you can say कि when you are getting added more and more solute to a pure water, तो वो सोल्यूशन बन जाएगा. तो उस सोल्यूशन के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर एंड मोर सोल्यूट, दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर. This is also the function of solute concentration. More the concentration of a solute, greater will be the amount of pressure applied in order to prevent water from diffusing. Okay, so जितना just try to understand कि osmotic pressure उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा solute है. Okay, so जो more the concentration, एक आपका pressure potential था वो water की वजह से था. This is the osmotic pressure that is due to the number of more concentration of solute. Okay, so you can see in the picture, more the concentration of a solute, greater will be the amount of pressure applied. उस पर उतना ज्यादा pressure apply होगा in order to prevent water from diffusing. An osmotic pressure of a solution is numerically equal to the osmotic or solute potential and is largely depend upon the number of solute and solvent molecule present in a given solution. So osmotic pressure जो वो किस पे depend करता है? नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल. एक सोल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट मॉलिक्यूल है, कितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है. सपोज 20 सोल्यूट मॉलिक्यूल इज देयर and 10 solvent molecule is there, so it means it is having more osmotic pressure. Okay, if it is having 20 solvent molecule and 10 solute molecule, it means it is having less osmotic pressure. Okay, and osmotic pressure is always a positive pressure, but osmotic potential has a negative sign. Means osmotic, just try to understand, this is important. ये आपको साइंस पूछ सकते हैं कि osmotic pressure का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. Okay, so in this you can say कि osmotic pressure is always a positive pressure. Okay, but osmotic potential has a negative sign. Osmotic potential means जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट जो है वो ऐड कर रहे हो. Okay, तो वो आपका osmotic potential आ गया. और just remember कि वाटर पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है. ओके, वाटर पोटेंशियल इज जीरो. जब आप उसमें सोल्यूट ऐड करोगे मीन -1 से -2 में, तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होता जा रहा है. ओके, सो मीन्स जो आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल है दैट इज हैविंग द नेगेटिव साइन.
Okay, so you can see here, this is the solute potential, pi for the osmotic pressure. Okay, so clear? Yes, is this clear? Yes, ma'am. Okay, so next you are having the plasmolysis. You have already studied about the plasmolysis in the chapter cell biology जो हमने पढ़ी थी, तो वहाँ हमने discuss किया था what is plasmolysis. Now you can see in the picture the plasmolysis is a condition which occur when water tends to move out of the cell and the cell membrane of a plant cell shrink away from its cell wall when it is placed in a hypertonic solution having more concentration. So what is the meaning of plasmolysis? कि एक प्लांट सेल जो है उसको आप किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालोगे, मींस अ सोल्यूशन हैविंग द मोर सोल्यूट और हैविंग द मोर कॉन्सेंट्रेशन मींस मोर सोल्यूट, तो डेफिनेटली वो सेल क्या करेगा, लूज करेगा. ओके, प्लाज्मोलिसिस मीन जब आप एक सेल को, प्लांट सेल को एक मीडियम के अंदर रखते हो, दैट मीडियम इज हैविंग द मोर सोल्यूट और इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, सो डेफिनेटली दैट प्लांट सेल जो है वो क्या करेगा, लूज करेगा वाटर from inside to outside, means endosmosis is there. So during this process the hypertonic solution cause exosmosis. जो hypertonic solution होगा वो exosmosis करेगा, means outward movement of water, and the water first move out from the cytoplasm and then from the central vacuole. So just try to understand कि आपने प्लांट सेल को कहाँ रखा, एक सोल्यूशन के अंदर जिसके अंदर क्या, हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की है. तो प्लांट सेल क्या करेगा, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सोल्यूट की ज्यादा है, अंदर वाटर की ज्यादा है, तो डेफिनेटली वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स इनसाइड टू आउटसाइड, मीन एक्सॉस्मोसिस होगी. और एक्सॉस्मोसिस होने से क्या होगा, वाटर जो है पहले उसमें, पहले प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में से वाटर मूव करेगा एंड देन फ्रॉम द सेंट्रल वैक्यूल. सेंट्रल पहले तो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में से वाटर मूव करेगा एंड आफ्टर दैट फ्रॉम द वैक्यूल आल्सो. This withdrawal of water through diffusion into the extracellular fluid causes the cell to shrink in size. ओके, सो डेफिनेटली जब वाटर लॉस हो जाएगा साइटोप्लाज्म से भी, वॉक्यूल से भी, तो देन विल व्हाट विल हैपन, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, ड्यू टू विच सेल मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम द वॉल एंड स्पेस दस फॉर्म बिटवीन द सेल वॉल एंड द shrunken protoplasm is occupied or filled by the external solution. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब साइटोप्लाज्म में भी वाटर लॉस कर दिया, वॉक्यूल में भी लॉस कर दिया, सेल वॉल तो जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, वो तो लूज नहीं होगा, तो एनिमल सेल होता तो प्लांट सेल भी श्रिंक हो जाती, क्योंकि अब सेल वॉल वो तो वैसे ही रहेगी लेकिन जो अंदर का कंटेंट है वो श्रिंक हो जाएगा. ओके, साइटोप्लाज्म जो है वो वॉल से दूर चल जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, वॉक्यूल जो है वो श्रिंक हो जाएगा. तो उसने कहा ड्यू टू विच सेल मूव अवे फ्रॉम द वॉल, सेल वॉल अलग हो जाएगी, साइटोप्लाज्म और जो वॉक्यूल है वो अंदर श्रिंक हो जाएंगे. सो जो बीच की जो स्पेस है दैट इज कवर्ड बाय द एक्सटर्नल सोल्यूशन. Okay, so plasmolysis is clear. Yes, ma'am. Okay, so this is simple. इसमें कुछ नहीं है कि आपने simply you have to see कि आपने एक प्लांट सेल को कहाँ रखा है, एक सोल्यूशन में, that solution is having the more solute. Okay, तो अब अंदर पानी ज्यादा प्लांट सेल के अंदर, जो बाहर मीडियम है उसमें पानी ज्यादा कम है. ओके, सो व्हाट विल हैपन, द प्लांट सेल विल लूज वाटर. कैसे लूज करेगा, फर्स्टली वाटर विल कम आउट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, देन इट कम आउट फ्रॉम द वॉक्यूल. इफ इट, अभी हमने प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, अगर एनिमल सेल होता तो वो तो अभी तक क्या हो जाता, उसमें क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैसिड हो जाता, बिल्कुल श्रिंक हो जाता, क्योंकि ये एनी प्लांट सेल है तो सेल वॉल इज प्रेजेंट देयर, सो दैट्स व्हाई ओनली द इंटरनल जो वॉक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, वो श्रिंक होगा, सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर वैसी रहेगी. ओके, so this is the plasmolysis. Now you can see this also we have discussed कि plasmolysis में क्या होगा कि जैसे आपके प्लांट सेल जो हैं वो वाटर लॉस करते हैं, तो अगर आप उन्हीं प्लांट सेल को थोड़ी देर के बाद जो है वाटर लॉस करेंगे तो आपको फिर, पहले आप उसको हाइपरटोनिक में रखा तो दे हैव लूज द वाटर, बट इफ वी प्लेस दैट प्लांट सेल अगेन इन अ हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक मीन जिसमें वाटर ज्यादा है, तो डेफिनेटली इट अगेन गेन वाटर, वो फिर से वाटर गेन करेगा और फिर से क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा. ओके, क्योंकि आपने हाइपरटोनिक में रखा तो उसने वाटर लूज किया. इफ अगेन आपने उसको, जैसे आप प्लांट्स को ले लो, जस्ट कंसीडर प्लांट्स की एग्जांपल ले लो, प्लांट्स को
पहले उसको पानी नहीं मिला तो उसने वाटर लूज कर दिया, थोड़ी देर बाद आपने फिर से प्लांट्स को पानी दे दिया, तो डेफिनेटली वो जो है वो वाटर गेन करेंगे और फिर से क्या हो जाएंगे, जैसे आपके लीव्स ड्रूप हो जाते हैं, थोड़ी देर में पानी दो तो वो फिर से ठीक हो जाते हैं. ओके, सो इन द सेम वे if you again put that plant cell in a hypotonic means having more water, so definitely the plant cell जो है वो फिर से gain करेगा water, again become turgid. Okay, so उसने limiting plasmolysis the first stage of plasmolysis. limiting का मतलब होता है जिसमें वो first stage अभी plasmolysis हुई है. ओके, प्रेशर ऑन द वॉल बिकम रिड्यूस्ड, जो वॉल का प्रेशर है वो कम हो जाएगा. एट लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस द प्रेशर पोटेंशियल इज जीरो, मीन्स कि अब इसके पास पानी नहीं है तो डेफिनेटली दिस नो प्रेशर पोटेंशियल इज जीरो, वाटर ही नहीं है अंदर. सो द प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म. Thus, during this state of equilibrium, when flow of water into and out of the cell is same, the cells are called flaccid. उस टाइम पे सेल क्या होगा, फ्लैसिड, मतलब सेल के अंदर पानी नहीं है. ओके, सो यू कैन सी हियर दिस इज अ प्लाज्मोलिसिस्ट, देन दिस इज अ फ्लैसिड, फिर से पानी दे दिया, देखिए यहाँ से लूज हुआ वाटर. ओके, देन इट बिकम फ्लैसिड एंड देन जब आपने फिर से जो उस प्लांट सेल को हाइपोटोनिक में रख दिया, देन अगेन इट बिकम टर्जिड. Okay, this is the deplasmolysis. Deplasmolysis means the process in which plasmolysis cell, when again placed in a pure water or a hypotonic solution, build up a turgor pressure. Means वही जो सेल जो फ्लैसिड हो गया, जिसने वाटर लॉस कर दिया, अब उसी सेल को अगर आप एक फिर से हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखोगे तो टर्गर प्रेशर जनरेट होगा, in which water enter the cell and cause the cytoplasm to build up a pressure against the wall. वो अगेन सेम हो जाएगा, सेल गेन करेगा वाटर, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, वॉक्यूल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा. ओके, सो ड्यूरिंग दिस स्टेज वाटर एंटर्स ड्यू टू एंडोस्मोसिस. सो जस्ट रिमेंबर कि फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, एक्सोस्मोसिस. जब आपने हाइपरटोनिक में रखा तो उस टाइम पे क्या हो रही थी, एक्सोस्मोसिस. अब आपने हाइपोटोनिक में रखा तो देन देयर इज अ एंडोस्मोसिस, मींस सेल इज अगेन गेनिंग द वाटर. और जब एंडोस्मोसिस होगी देन व्हाट विल हैपन, द प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट रिजिड वॉल ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर by the protoplasm and it is called as a pressure potential. So due to exosmosis pressure potential will decrease. Okay, means आपका start कैसे हुआ, loss of water, exosmosis, pressure potential decrease. Then second step में क्या आ गया, gain of water, endosmosis and pressure potential will increase. Okay, deplasmolysis should be followed immediately by after plasmolysis, otherwise the cell protoplasm become permanently damaged. Okay, तो ये जो आपकी लिमिटिंग है ना, लिमिटिंग मीन्स कि एक स्टेज होती है, ये नहीं कि आप प्लाज्मोलिसिस हुई है फिर आप बड़े दिन के बाद भी आप उसको पानी दो तो वो फिर से डीप्लाज्मोलिसिस करेगा. सो दिस अ टाइम लिमिट कि डीप्लाज्मोलिसिस के इमीडिएटली शुड बी फॉलोड इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोलिसिस, अदरवाइज द प्रोटोप्लाज्म बिकम परमानेंटली डैमेज. Pressure potential of a flaccid cell is zero because there is no net movement of water in and out of the cell. So just remember कि pressure potential जो होता है flaccid cell का वो क्या होता है, zero. Okay, so clear. Plasmolysis is clear. Deplasmolysis. Any Yes, doubt is ma'am. okay. Others, any doubt is there? Yes, ma'am. Now your No, last ma'am. topic, last term is the imbibition. Okay, imbibition क्या है, it is a special type of diffusion in which water is absorbed by the solid particle of a substance. So it is adsorption, not absorption. Okay, I hope you all know कि adsorption और absorption क्या होती है. Do you know what is the meaning of the what is the difference between the adsorption and the absorption? Can anybody give me the answer? Yes. Say yes or no if you know. Then Ma'am, can you repeat question? what is the difference between the absorption and adsorption? Yes. Say yes or no. Ma'am, absorption is to absorb and adsorption is to something like adding. Okay. Okay. So absorption means कि सेल के अंदर पानी जाना है, ठीक है, that is the absorption. Adsorption
AD एड्सॉर्प्शन मीन्स कि उसके सरफेस पे वाटर जो है, जो सिर्फ सरफेस पे वाटर आता है, जैसे सपोज सेल को आप लेते हो तो सेल के अगर अंदर पानी जा रहा है दैट इज एब्जॉर्प्शन, बट इफ इट इज कमिंग ऑन द सरफेस, अगर सिर्फ जैसे सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ही आ रहा है, उस सेल मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज द एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन मीन ओनली ऑन द सरफेस, सो दैट इज द एड्सॉर्प्शन. नाउ सो इन वाइब्रेशन में okay, screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो उसने क्या है, हाँ, सो वाटर मॉलिक्यूल गेट्स टाइटली एब्जॉर्ब एट द सरफेस ऑफ अ मॉलिक्यूल. जब जैसे सपोज आप सेल लेते हो या कोई भी चीज ले रहे हो आप, ठीक है, तो उसके अगर सरफेस के ऊपर ही एब्जॉर्ब होगी, सरफेस के ऊपर ही रहेगा वाटर मॉलिक्यूल, तो उसको आप एब्जॉर्प्शन बोलते हो. अगर अंदर जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल देन इट इज कॉल्ड एज अ एब्जॉर्प्शन. दिस लीड देम टू इंक्रीज एनॉर्मसली इन वॉल्यूम. ओके, जब किसी भी सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगे तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा. द सॉलिड पार्टिकल विच इम्बाइब वाटर और एनी अदर लिक्विड इज कॉल्ड इम्बाइबेंट. जिसके अंदर पानी, जिसके सरफेस के ऊपर पानी जाएगा उसको आप क्या बोलोगे, इम्बाइबेंट बोलोगे. एंड वाइल द लिक्विड विच इज इम्बाइब, कोई भी टाइप का लिक्विड है जो लिक्विड जा रहा है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज इम्बाइबेट. Process of imbibition is also known as type of diffusion because in this the movement of water occurs along concentration gradient, means from higher concentration to lower concentration. Now imbibition ki when you see the significance importance, so act as the initial stage in germination of the seed when seeds soak and imbibe water. Seeds की जो germination होती है due to this फिनोमिना इसी की वजह से होती है, क्योंकि सीड्स जो है वो क्या करेंगे, जब आप सीड को वाटर के अंदर सोक करते हो वो इनवाइब करते हैं और आफ्टर इट इज अ जर्मिनेशन, तो उसके बाद उसकी जर्मिनेशन होती है. हेल्प इन स्वेलिंग ऑफ सीड. स्वेलिंग मीन सीड्स, वाटर, सीड को आपने सोक किया वाटर के अंदर तो दे विल गेन वाटर, सो देयर इज अ स्वेलिंग ऑफ सीड. हेल्प सीडलिंग्स टू कम आउट ऑफ सॉइल. सीडलिंग्स को जो है वो हेल्प करता है सॉइल से बाहर आने के लिए. इट इज डोमिनेट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट. जो वाटर एब्जॉर्प्शन होती है रूट की, जो प्लांट्स जो हैं रूट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर में, तो उसमें जो इनिशियल स्टेज होती है, इनिशियली वहां पे एब्जॉर्प्शन होती है, मींस इम्बाइबेशन होती है, और उसके बाद फिर जो है आगे फर्दर एब्जॉर्प्शन होगी. एंड इन ओल्डर टाइम द इम्बाइबेशन प्रेशर वाज यूज्ड इन ब्रेकिंग द रॉक्स एंड स्टोन्स. इसमें क्या है कि इम्बाइबेशन प्रेशर में क्या है कि रॉक्स और स्टोन्स में जो भी उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वाटर गेन करेंगे. वाटर गेन करने से क्या होगा कि उसका जो प्रेशर है अंदर वो बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से रॉक्स और स्टोन्स जो थे वो ब्रेक होते थे ड्यू टू दिस इम्बाइबेशन. ओके, वाज यूज्ड इन ब्रेकिंग द रॉक्स एंड स्टोन्स, क्योंकि वाटर गेन किया तो प्रेशर जनरेट हुआ, तो प्रेशर जनरेट जैसे सीडलिंग्स में है तो वो ब्रेक हो जाते हैं, इन द सेम वे रॉक्स और स्टोन्स के ब्रेक में भी इसका यूज होता है. Okay, so this is all about the important terms of the transportation. In the next class, we will start with the actual process of transportation, that is upward movement of water, ascent of sap, transpiration, and all the theories we will discuss there. But this is all about the terms. But just remember, today you all have to revise about the diffusion, the facilitated diffusion, the active transport, and the osmosis. Okay. So Okay, anything you want ma'am. to ask regarding this? Any doubt is there? Okay, ma'am. Okay. Anything you want to ask, please tell me. Any question is there? No, ma'am. Okay. So can I end the No, session ma'am. now? Yes, ma'am. Okay. So all of you just leave the class. Those who don't have any question, they can leave the class. Thank you, And if ma'am. you have any question, you okay. If you have any question, you can ask. If you don't have any question, you can leave the class. Yes, Ruchira Priyanshi. Any question?
Otherwise, you can leave.